Hello students, welcome back to our today's class. I hope all of you have a great class test. Related to your class test, very good students. You have performed very nice, very well. Many students got above 15 out of 20 and many of you have got above 10. So I think keep studying, keep watching tutorial videos. Okay, so that is about your class test. Now today we are going to start a new chapter, that is our chapter number 2, periodic classification of elements. Yes, so today onwards we are going to start this chapter. Pay attention towards this, and I hope all of you have a textbook. So while watching tutorial videos, please open your textbook so that you will understand the content well, and whatever I am teaching you will came to know about the main points and all. Okay, so before starting, let's remember something that I hope all of you have know that what are the different types of matters, that is solid, liquid, gaseous. These are what? These are the states of matters. Okay, then you all know that what are the types of elements. Yes, think about it. What are the different types of elements you have already learned in your previous standard? That is metal, non-metals and metalloids. Okay, so you know that in the initial classification of element, there were classified into the two groups. Okay, पहले हमको सिर्फ इतना ही पता था कि मेटल होते हैं और नॉन मेटल होते हैं, बट लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, लेटर ऑन another class of elements called metalloids was noticed. Okay, so these are the three types of elements, that is metal, non-metal and metalloids. Metal मतलब क्या? Gold, silver. Yes, I hope you all know that. Then what are the smallest particles of matter called? Obviously atoms. Okay, atom is the smallest particle of matter. Okay, so this is about some basics of this chapter. Now here, if you can see page number 16, in this page classification of element, that is a reduced syllabus, so that I'm not going to take. Okay, whatever I need, that I should start the topic with this, that I have already covered. Okay, so now we are directly moving towards the first topic, that is, yes, that is Dobereiner's triads. Okay, first of all, let's think about the term, that is triads. What do you mean by triads? Triads which means a group of three. Okay, जैसे कि आपको पता है ट्राइंगल, ट्राइंगल होता है, वैसे ट्राइड्स यहाँ पे क्या होता है? ट्राइड्स which means three element, a group of three element. Okay, so remember this, that Dobereiner's triads, which means a group of three element. With the help of group of three element, Dobereiner suggests something, he gives some kind of things that we are going to learn. Okay, so yes, in the year 1817, a German scientist, Dobereiner, suggested that the properties of elements are related to their atomic masses. तो उन्होंने क्या सजेशन दिया? जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो किससे रिलेटेड है? एटॉमिक मासेस. एटॉमिक मासेस, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक मासेस? द मास ऑफ एन एटम, मतलब एक एटम का जो वेट रहता है उसको क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास. ओके, सो उन्होंने क्या सजेस्ट किया? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स are related to their atomic masses. Yes, then he made a group of three elements each having similar chemical properties and called them triads. तो उन्होंने क्या किया? तीन तीन एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया जिनके केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर है, सेम है, और उनको क्या बोलेंगे? उनको उन्होंने क्या बोला? ट्राइड्स. ठीक है, यस. So the next he arranged the three elements in a triad in an increasing order of atomic mass and show that, उन्होंने क्या किया? वो जो तीन एलिमेंट जो उन्होंने लिए थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस्ड किया अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास. Okay, and he showed that the atomic mass of the middle element was approximately equal
to the mean of the atomic masses of the other two elements। ठीक है, तो ये क्या है, ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक ओवर हियर। ये जो ट्रायड है, ये यहाँ पे 3 एलिमेंट लिया है, कौन सा, लिथियम, देन सोडियम एंड पोटेशियम। ओके, लिथियम का एटॉमिक मास है 6.9। अब हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, दैट इज A+C/2। लेट्स हैव अ लुक अबाउट दिस। लिथियम जो है उसको हम लोग ए नाम देते हैं, लिथियम इज ए, Na इज बी एंड K इज C। okay, so according to this formula, if we will go, then what we will get, A+C, which means what, lithium का जो atomic mass है that is 6.9 plus C कौन है, K, that is potassium, उसका atomic mass कितना है 39.1। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 46, बट 46 डिवाइड बाई 2 भी तो करना है, यस। सो अगर हम लोग 46 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा 23.0। और ये 23.0 किसका एटॉमिक मास है, यस वेरी गुड, ये किसका है, Na का, दैट मीन्स ये सोडियम का एटॉमिक मास है। तो उन्होंने बस इतना ही बोला कि एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट was approximately equal to the mean of atomic masses of the other two elements। yes, तो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 16 पे इतना दिया है कि लिथियम ये जो पेयर है ये हम लोगों ने यहाँ पे लिया। यू कैन ट्राई विद सेकेंड एंड थर्ड विच इज़ देयर, दैट इज कैल्शियम एंड थर्ड वाला जो है क्लोरीन का, तो वो भी तुम आप लोग देख सकते हो एंड यू फाइंड आउट दैट वेदर इट इज़ मैचिंग और नॉट। okay, yes, however all the known elements could not be classified into the Dobereiner triads। जैसे कि सारे एलिमेंट्स उन्होंने यूज नहीं किए अपने क्लासिफिकेशन में, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डोबेराइनर ट्राइड्स। उन्होंने बस इतना ही किया कि 3 एलिमेंट जिनके केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है उसका एक ग्रुप बनाया और उनको प्लेस्ड किया अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, ठीक है। एंड उन्होंने देखा कि क्या इसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज शो होते हैं क्या, लाइक दिस मिडल नंबर वाला। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड टिल दिस। यस, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। व्हाट इज दैट? या, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, सो लेट्स हैव अ लुक। The English scientist John Newland correlated the atomic masses of elements to their properties in a different way। उन्होंने कुछ different way introduced किया, क्या किया देखते हैं। Okay, so this is the scientist John Newland। Okay, so in the year of 1866, Newlands arranged the elements known that time in an increasing order of their atomic masses। तो उस टाइम पे जो एलिमेंट उनको पता था, जो एलिमेंट उनको नोन थे, तो उन्होंने क्या किया, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मासेस, उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है वैसे उन्होंने वो प्लेस्ड किया। तो उन्होंने क्या फाउंड आउट किया, लेट्स सी। ओके, देन इट स्टार्टेड विद द लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन एंड एंडेड अप विथ थोरियम। तो कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, लाइटेस्ट एलिमेंट जो है हाइड्रोजन से, एंड एंड किधर तक किया, थोरियम तक, ठीक है। यस, देन ही फाउंड आउट दैट एवरी 8 एलिमेंट हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ फर्स्ट। तो उन्होंने क्या फाउंड आउट किया कि जो 8 एलिमेंट है, एवरी 8 एलिमेंट, उनके प्रॉपर्टीज सिमिलर होते हैं किससे, फर्स्ट एलिमेंट जो है उससे। कैसे, चलो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम इज द 8th एलिमेंट फ्रॉम लिथियम एंड बोथ हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। ये टेबल आपको रिड्यूस्ड सिलेबस में है, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये टेबल समझेगा तो आपको ये न्यूलैंड का ऑक्टेव्स का जो लॉ है वो पूरा अच्छी तरह से समझेगा। सो दैट इज़ फॉर दैट आई हैव टेकन दिस इन द एक्सप्लेनेशन एंड यू ऑल्सो हैव टू फॉलो दिस। ओके, सो अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उन्होंने क्या बोला, दैट एवरी 8 एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज विच आर सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट। तो हम लोग देखते हैं सोडियम कहाँ पर है, Na इज हियर, यस।
सो सोडियम इज द एथ एलिमेंट फ्रॉम लिथियम। लिथियम कहाँ पर है, यहाँ पर। तो हम लोग काउंट करेंगे, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, एथ एलिमेंट, एंड दे हैव व्हाट, दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो उन्होंने यही शो करने की कोशिश की है। Yes. Then magnesium shows similarity to beryllium and chlorine shows similarity with fluorine. Magnesium कहाँ पर है, यहाँ पर। Magnesium shows similarity with beryllium, Be. If you count the number, then here you can see 1 2 3 4 5 6 7 8। Yes, तो उन्होंने जो बोला था वो राइट था। And what? Chlorine shows similarity with fluorine. Chlorine and fluorine. Yes. Here in this elements also there is a distance of 8 element. Okay. Yes. न्यूलैंड्स कंपेयर दिस सिमिलैरिटी विद द ऑक्टेव्स इन म्यूजिक। तो जैसे कि आपको पता है म्यूजिक में जो स्वर होते हैं, दैट इज सा रे गा मा पा दा नी, और फिर सा आता है, अगेन फिर सा आता है, बट ये वाला सा और पहले वाला सा उसमें डिफरेंस होता है। ये लास्ट वाला जो सा है उसमें हाई नोट लेते हैं। यस, सो उन्होंने वही यहाँ पे कंपेयर करने की कोशिश की है कि ये जो है, जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उसको म्यूजिक के साथ कंपेयर किया। ओके, ही कॉल्ड द सिमिलैरिटी ऑब्जर्व्ड इन एथ एंड द फर्स्ट एलिमेंट एज द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो उन्होंने जो सिमिलैरिटी ऑब्जर्व किया इन बिटवीन एथ एलिमेंट एंड द फर्स्ट एलिमेंट, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा, तो उन्होंने उसको क्या बोला, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ओके, वेरी सिंपल। Yes, then there are some limitations of Newland's octaves. उनके उन्होंने जो इंट्रोड्यूस्ड किया उसमें थोड़ा कुछ कमी रह गया। तो व्हाट इज दैट, लेट्स सी। दिस लॉ वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। तो ये जो लॉ है वो कैल्शियम तक ही सीमित है, उससे आगे नहीं गया। तो कैल्शियम तक ही ये एप्लीकेबल है। ओके, that is a limitation. Then Newlands fitted all the known element in a table of 7 into 8, that is 56 boxes. Okay, तो 56 boxes में उन्होंने element को placed किया। Yes, then Newlands placed 2 elements in each in some boxes to accommodate all the known elements in the table. जैसे कि आप टेबल में देखेंगे, यहाँ पर यू कैन सी एट द एंडिंग, यहाँ पे कोबाल्ट एंड निकेल है। ओके, हियर बी आर से पहले लास्ट एंड सेकेंड कॉल रो। तो हियर आप देखेंगे कोबाल्ट एंड निकेल, ये उन्होंने दोनों एक ही जगह पे लिया है। एंड हियर इन दिस ऑल्सो इन द मा रेस CE एंड LA। ओके, तो वो जो है वो भी उन्होंने दो दो एलिमेंट लिया है एक ही बॉक्स में, एक ही साथ लिया है। सो दैट इज वन ऑफ द काइंड ऑफ लिमिटेशन। ओके, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, दो एलिमेंट को एक साथ प्लेस्ड नहीं करना चाहिए था। यस, हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कोबाल्ट एंड निकेल, ये दो एलिमेंट है बट उन्होंने एक ही साथ उनको डाला है। एंड इसको भी CE एंड LA, उनको भी एक ही साथ डाला है। सो दैट इज अ काइंड ऑफ लिमिटेशन। Moreover, he placed some elements with different properties under the same note in the octave. तो उन्होंने जितने भी मतलब कुछ एलिमेंट है उनके प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, फिर भी उनको क्या डाला है, उनको सेम नोट इन द ऑक्टेव डाला है। ओके, जिनके प्रॉपर्टीज डिफरेंट है उनको भी उन्होंने सेम ही नोट में डाला है। सो दैट इज व्हाट, दैट इज वन काइंड ऑफ लिमिटेशन। ओके, देन for example, Newland placed the metals, that is cobalt and nickel, under the note Do along with the halogen, while Fe having similarity with cobalt and nickel. तो यहाँ पे वो लोग वो यही बोलना चाहते हैं कि कोबाल्ट एंड निकेल उनका मैच नहीं होता है, फिर भी उनको एक ही जगह में डाला है। वाइल Fe जो है, Fe has similarity with cobalt and nickel, तो उसको अवे फ्रॉम देम डाला है विथ नॉन मेटल अंडर द नोट, दैट इज Ti। मतलब जिसको एक साथ डालना चाहिए था उनको नहीं डाला, और जिसको नहीं डालने का था उनको डाला है एक साथ एक ही बॉक्स में। सो दैट इज वन काइंड ऑफ लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। ओके, देन ऑल्सो न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स डिड नॉट हैव प्रोविजन टू अकोमोडेट द न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट। अगर कोई न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट होता है, अगर कुछ एलिमेंट
जो डिस्कवर नहीं हुए हैं, अगर वो डिस्कवर हुए तो न्यूलैंड के ऑक्टेव में उनके लिए प्लेस नहीं है। ठीक है। The properties of the new elements discovered later on did not fit in the Newland's law of octave. तो जो बाद में इंट्रोड्यूस्ड होने वाले हैं उनके प्रॉपर्टीज जो है वो और न्यूलैंड ने जो इन्वेस्ट किया है, न्यूलैंड ने जो इंट्रोड्यूस्ड किया है वो डिफरेंट है। तो वो जो न्यू एलिमेंट है वो इनके ऑक्टेव में फिट नहीं होंगे। ठीक है। यस। So this is a very short topic we have taken so that you will understand it very better. Okay, so what we have learned today, we have learned Dobereiner strides. Okay, ये बहुत ही simple topic है। Then here in the page number 60 also, can you tell me, आपको है, that is identify Dobereiner strides from the following groups of element having similar chemical properties. तो आपको क्या करना है वो आपको पता चला, राइट। पहले जो है MgCAnSr, तो आप क्या करेंगे, MgNSr को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, और उनका अगर आंसर 40 के रेंज में आया, अगर 39 आया तो भी चलेगा, 40 के रेंज में आया, दैट मीन्स इट शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। ओके, तो ऐसे आपको हर 3 का कंप्लीट करना है और देखना है वाइल दे हैव सम सिमिलर प्रॉपर्टीज और नॉट। ठीक है। So yes, today we have learned Dobereiner strides and Newland's law of octave. Okay, go to the video content, do it very nicely and mark some important points. ठीक है। Okay, bye, thank you.